Good evening, all. Warm welcome to sixth session of our counselor training program series. It has been going wonderful, and your response is also really overwhelming. Uh, all the sessions are getting good feedback. We are getting good feedback, and we are getting good response as well. Last four sessions, we have been having invitees, and we are really glad to have these experienced ophthalmologists who are sharing their experiences and their knowledge with us. So similarly, today we have Dr. Pratibha Chachadi. We have already met her once in Basics of Eye Anterior Segment session. We are really glad to have you once again, ma'am. And your first session was really hit. We got very good response from the audience, and they really wanted you to be back for some other session. So today she'll be covering advancements in eye care as far as posterior segment is concerned. We have already introduced Dr. Pratibha last time. She is practicing VR surgeon at Lions Eye Hospital, Ratnagiri, and has over 10-12 years of experience with Lions Eye. So welcome, Dr. Pratibha, and I request you to kindly start with your presentation, madam. Thank you, Dr. Senthil, Dr. Pratik. Good evening, one and all. I really don't know how many of the counselors present today are into posterior segment counseling, but yet I think most of the institutes have separate counselor for the anterior segment and the posterior segment. I would like to just have a count where number of people who are there today are really into posterior segment. I will be going really slow because it's not very easy to understand the counseling part for the posterior segment, because first of all, the procedures may be very, very new to all of them. First, let me let you know that the procedures which are done for the retina or the posterior segment. First of all, the most common procedure done is fundus fluorescein angiography. For decades, we have been doing it with dye, that is the fluorescein dye. Now, recently, since 5-6 years, we have one more instrument where we are capable of doing fundus fluorescein angiography without a dye. That is called as OCTA, that is OCT angiogram. Now, followed by fundus fluorescein angiography in the OPD, the second most common procedure done is lasers. Lasers, we do it usually on the slit lamp assisted, and IDO assisted. IDO is nothing but indirect ophthalmoscopy. Indirect ophthalmoscopy, usually periphery, to reach out to the periphery, we use the IDO, as well as to do it in the pediatric patients. लेजर्स हम अडल्ट्स में और पीडियाट्रिक पेशेंट्स में दोनों में कर सकते हैं. वो कॉमन प्रोसीजर है. अडल्ट्स में यूजुअली हम लोकल एनेस्थीसिया, पैराकेन में, टॉपिकल एनेस्थीसिया में करते हैं, और पीडियाट्रिक्स पेशेंट में लेजर्स हम यूजुअली अंडर शॉर्ट जीए करते हैं. या फिर बहुत जो कॉमन प्रोसीजर्स हैं जो ओपीडी में होते हैं वो फंडस फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी है. दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर डन. Fundus fluorescein angiography is usually done with a dye that is called as fluorescein. As I said before, now since past 5-6 years, we have an instrument that is OCT angiogram, where we can assess the retinal vasculature. Retinal vasculature को हम assess कर सकते हैं बिना dye use किए हुए. उसके angiography के बाद the second most common procedure done in the retina OPD is the lasers. The लेजर को हम स्लिट लैम्प में ही करते हैं एटलीस्ट 65 to 75% ऑफ द टाइम्स अडल्ट्स में, और बहुत ज्यादा पेरिफेरी में करना है तो आईडीओ यूज करते हैं. अडल्ट्स में यूजुअली हम टॉपिकल एनेस्थीसिया, पैराकेन डाल के करते हैं, और पीडियाट्रिक्स पेशेंट में
रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी है तो वो यूजुअली 3 महीने का या 2 महीने का रहता है बच्चा, तो इसलिए शॉर्ट जीएमए करते हैं। इसके अलावा आईपीसीवी बोल के एक कंडीशन है, उसमें हम फोटोडायनामिक थेरेपी लेजर यूज करते हैं। डाई के साथ वो लेजर किया जाता है, इसलिए वो फोटोडायनामिक थेरेपी बोलते हैं उसको। Next common procedure which is done in posterior segment is intravitreal injections. As counselors, you will this is the most common procedure which you will come across for counseling. Intravitreal injections हमेशा हम ओटी में ही देते हैं, वो ओपीडी प्रोसीजर नहीं है। ओटी में देते हैं इसलिए कंसेंट लेना पड़ता है, इसलिए काउंसलिंग करना पड़ता है और डेट देना पड़ता है उनको, और एनेस्थेटिक फिटनेस लेना पड़ता है। इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड में इंट्राविट्रियल ट्रायमसिलोन है। अभी नए विदाउट प्रिजर्वेटिव ड्रग्स आते हैं इंट्राविट्रियल, ट्रायमसिलोन और केनालॉग, तो उसके रिएक्शंस थोड़े कम होते हैं। उसके बाद बहुत दिन के लिए हमको स्टेरॉइड का असर चाहिए तो हम डेक्सामेथासोन इम्प्लांट यूज करते हैं। इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस में स्टेरॉइड के बाद नेक्स्ट कॉमन इंजेक्शंस है एंटीवेजिफ्स। एंटीवेजिफ्स में मैंने सारे ब्रांड के नाम लिखे हैं बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द फार्माकोलॉजिकल नेम्स। अवास्टिन है, अवास्टिन इज नथिंग बट बेवासिजुमैब। ल्यूसेंटिस है, ल्यूसेंटिस इज नथिंग बट रैनिबिजुमैब। आइलिया है अभी, अफ्लिबसर्ट, एंड देन मैक्यूजन, दैट इज पिगैप्टिनब। एंड देन एंडोफ्थेल्माइटिस में हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, और कुछ सेंटर्स में, हायर टर्शियरी सेंटर्स में रेटिनोब्लास्टोमा, मेल्फिलान इंजेक्शन इंट्राविट्रियल देते हैं। सो दीज आर द ड्रग्स विच वी गिव इंट्राविट्रियल, मतलब जो इंजेक्शन विट्रियस के अंदर देते हैं 26 या 27 या 30 गेज नीडल यूज करके, थ्रू द स्क्लेरा वी गो एंड वी गिव इट इनसाइड द विट्रियस कैविटी। ओटी में after the intravitreal injection, the most common surgeries which are done in the posterior segment are pars plana vitrectomy. Pars plana vitrectomy में सिर्फ vitrectomy करते हैं, where we are not touching any other part of the retina, we are just removing the vitreous, सिर्फ vitreous को कटर से निकाल रहे हैं, तो उसको हम pars plana vitrectomy बोलते हैं। यहाँ पे 3 पोर्ट्स बनते हैं, इसलिए 3 पोर्ट vitrectomy भी बोला जाता है। Only vitreous is removed in vitreous hemorrhage and endophthalmitis. RD surgeries are the next most common surgeries in posterior segment. RD surgeries में usually पहले हम विट्रेक्टमी करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेटिना जहां से डिटैच हुआ रहता है उसके नीचे पानी भरा रहता है, तो वो पानी निकालते हैं, उसको सब रेटिनल फ्लूइड ड्रेनेज बोलते हैं। और उसके बाद विट्रेक्टमी से हमने विट्रियस को निकाला रहता है, तो इसलिए अभी रेटिना को फिर से अटैच करने के लिए हमको सब्स्टिट्यूट डालना पड़ता है। वो गैस होता है या फिर ऑयल होता है, वो ऑन टेबल डिपेंडिंग अपॉन द केस द सर्जन डिसाइड्स इट। ओके, तो ऑयल या गैस डालने के बाद रेटिना को पूरी तरह से उसकी जगह पे बिठाने के बाद वो वहीं पे बैठा रहे, और उसके और कोरॉइड के बीच में वो कनेक्शंस फिर से फॉर्म हो, उसके लिए क्रायो या लेजर करते हैं। ये रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी होता है, ठीक है। और उसके बाद रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी के बाद अगर ऑयल डाला है तो वो 3 महीने के बाद या फिर 6 महीने के बाद, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीने में हम ऑयल निकाल देते हैं। तो ऑयल रिमूवल के लिए दूसरा सर्जरी चाहिए रहता है। और next common surgery which we do is for tractional retinal detachments and with macular hole. उसमें हम एक्स्ट्रा प्रोसीजर क्या करते हैं, विट्रेक्टमी करते हैं जहाँ पे विट्रियस को निकाला जाता है। यहाँ पे फ्रेश आरडी या रेगुलर रेटिनल डिटैचमेंट की तरह पानी नहीं भरा रहता है, सिर्फ ट्रैक्शन रहते हैं, तो वो ट्रैक्शनल मेम्ब्रेन्स को निकालते हैं, और चाहिए तो ऑयल या गैस डाला जाता है और फिर से लेजर किया जाता है। अगर ऑयल डालते हैं तो ऑयल रिमूवल 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने में निकाला जाता है। और गैस जब भी डालते हैं, गैस को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप हमारे ब्लड सर्कुलेशन में अब्सॉर्ब हो जाता है। ऑयल है तो उसको निकालना पड़ता है, उसको हमेशा के लिए वहीं पे छोड़ नहीं सकते।
तो these are the procedures. Once again, I'll just repeat it. Fundus fluorescein angiography, lasers, intravitreal injections, vitrectomy, plain vitrectomy, vitrectomy for RD surgery, vitrectomy for any tractional membranes or macular hole, and then oil removal surgeries. These are the most common procedures which are done in the posterior segment. अभी जो भी हम procedures करते हैं posterior segment में, consent form is very important. As a counselor, you should know that ये procedures जो limited है, they may be hardly some 5 or 10 procedures or 10 or 15 procedures, but in all of the situations, the diagnosis is different. The actual procedure what we do is different. तो implications अलग होते हैं हर एक condition में. तो कंसेंट फॉर्म बहुत जरूरी हो जाता है. इट्स नॉट अ कॉमन कंसेंट फॉर्म, जस्ट लाइक योर कैटरैक्ट सर्जरी. फॉर ऑल द कैटरैक्ट्स यू हैव अ कॉमन कंसेंट फॉर्म, बट यहाँ पे कंसेंट फॉर्म्स अलग होते हैं अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए. तो कंसेंट फॉर्म हमेशा इंग्लिश में होते हैं या फिर हिंदी में होते हैं या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है उसके मदर टंग में होते हैं. आइडियली मोस्ट ऑफ देम टाइप द कंसेंट फॉर्म्स इन 2 लैंग्वेजेस. ओके, तो कंसेंट फॉर्म में हमेशा इंस्टीट्यूशन का नाम रहता है या फिर क्लिनिक का नाम रहता है एड्रेस के साथ, इन पेशेंट का नाम, इन पेशेंट नंबर या आउट पेशेंट नंबर, पेशेंट्स नेम एंड कॉन्टैक्ट. ओके, एंड व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर इज बीइंग डन, उस प्रोसीजर का explanation रहता है with side effects. And then there will be a column where you are supposed to mention the diagnosis, which eye the procedure is going to be done, and the procedure, exact procedure what you are going to do it in details, like vitrectomy कर रहे हैं या oil डाल रहे हैं या along with that you are giving injection और laser कर रहे हैं. तो वो procedure completely clearly लिखना पड़ता है. This is before the surgery is done. The surgeon would have decided, you will have to communicate with him or her and then write exactly the same way. Short forms nahi likhna rehta hai. You are supposed to write it in complete form on the complete without using any short forms. You're supposed to write it completely on the consent form. Then there will be always a column for signature of the patient. The patient should have understood it. If the patient is not, then you should take the signature of the attendee. There is always a column for signature of the doctor and the anesthetist. In spite of this, if there are grave morbidities, like patient में ही morbidities ज़्यादा है, like if a patient has already had a MI, the patient is very obese, the patient is asthmatic, anesthetically challenging cases है, तो और अगर on table the patient is not comfortable, or because retina surgeries are done for at least 1.5 to 2 hours, कभी कभी 2.5 hours तक लेटे रहना पड़ता है. तो आस्थमेटिक पेशेंट, बहुत ही ओबीस पेशेंट के लिए वो इतना कंफर्टेबल सर्जरी नहीं है. तो कभी कभी आपको वो देख के एनेस्थेटिक ओपिनियन जो मिलता है उसके हिसाब से वो प्रोग्नोसिस या ग्रेव प्रोग्नोसिस सेपरेटली लेना पड़ेगा उसके लिए. हमेशा कंसेंट फॉर्म्स भरने से पहले कोऑर्डिनेटर हो या काउंसलर हो या रेसिडेंट डॉक्टर्स हो, उनके लिए चेकलिस्ट रहता है. वो क्रॉस चेक करते हैं पेशेंट को सर्जरी के लिए पोस्ट करने से पहले, उनका सिग्नेचर होता है. वो क्रॉस चेकलिस्ट चेक होने के बाद कंसेंट फॉर्म भरना पड़ता है लास्ट में. ठीक है, कंसेंट फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ द प्रोसीजर्स फॉर द पोस्टीरियर सेगमेंट, बिकॉज पोस्टीरियर सेगमेंट के प्रोसीजर्स जो हैं वो हम नजर बचाने के लिए करते हैं, और नजर कितना वापस आता है उसकी गारंटी नहीं रहती है. तो कंसेंट फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोस्टीरियर सेगमेंट प्रोसीजर्स. अभी फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी है. फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी ओपीडी प्रोसीजर है, मगर उसके लिए भी कंसेंट लेना पड़ता है. क्यों? क्योंकि फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, एज आई सेड, सिंस डिकेड्स वी हैव बीन डूइंग इट विथ यूजिंग द डाई. तो डाई जो है वो फ्लोरेसेंट रहता है, फ्लोरेसेंट डाई है. ये थोड़ा एनाफिलैक्टिक रिएक्शन लाइक एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकता है कुछ लोगों में. यूजुअली इट इज 1 in 1 lakh, but still we do take the consent and then only do the procedure. Okay,
तो फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी के लिए जब भी पेशेंट पोस्ट होता है वो इमीडिएटली हम नहीं कर सकते। अभी आज ओपीडी में पेशेंट आया, सर ने बोला कि ये डायग्नोसिस है, तो इसके लिए एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। वी कांट डू इट इमीडिएटली। व्हाई? बिकॉज we want the patient to be at least 6 hours nil oral. Why we want the patient 6 hours nil oral? Because the dye that we are using induces nausea or vomiting. So usually it is not a immediately done procedure. You will have to give a date for that. So you 6 hours nil oral रख के उनको बुलाना पड़ता है, ठीक है। The concentration of the fluorescent dye usually हम 5 ml का यूज करते हैं, 5 ml with 10% concentration, but कुछ जगहों में 3 ml with 20% भी यूज करते हैं और 10 ml with 10% भी यूज करते हैं। 3 ml with 20% induces more of nausea and vomiting in spite of being the patient being nil oral. तो इसीलिए most of them prefer 5 ml with 10% concentration. The fluorescent dye is the only the fluorescent machine is there, and then the dye is the only one which we are using externally. तो उसका purchase cost somewhere between 60 rupees to 200 rupees होता है one vial के लिए, depending upon the company whichever you are buying. हमेशा पेशेंट को बुलाने के बाद उसके most of the patients whom we suggest angiography are diabetic patients या फिर old age patients above 60 years. यंग पेशेंट्स बहुत ही कम होते हैं जहाँ पे हम एंजियोग्राफी करते हो। तो हमेशा डायबिटीज की गोली जो है, like if you are posting the patient for the next day, you always tell them that on the day of angiography you either take half dose of your diabetic tablets or you avoid it completely. You can take it after the procedure. Okay, because जब वो डायबिटिक रहते हैं और वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं एफएफए के टाइम पे, इसलिए हाफ डोज लेने के लिए बोलना पड़ता है, या फिर कंप्लीटली अवॉइड कर दो, प्रोसीजर होने के बाद ले लो, ऐसा बोलना पड़ता है। एफएफए करने के बाद एक हफ्ते के लिए वो एंजियोग्राफी फ्लोरेसेंट डाई यूज करते हैं, इसलिए देयर विल बी अ येलोइश यूरिन डिस्कलरेशन। समटाइम्स वेरी फ्यू पीपल विल हैव स्किन डिस्कलरेशन आल्सो, इट्स वेरी रेयर, बट यूरिन डिस्कलरेशन कॉमन है। थोड़ा सा भी इचिंग है तो पेशेंट को अविल या टैबलेट सिट्रिजिन एंटी एलर्जिक देख के भेजना पड़ता है। एंजियोग्राफी करने के बाद इमीडिएटली नहीं भेज सकते, उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है 1 घंटा या 1.5 घंटा, उसके बाद ही भेज सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि एफएफए पेशेंट, सिंस द पेशेंट्स आर ओल्ड एज पेशेंट्स, they will have most of them will have hypoglycemic attacks. तो इसलिए हमेशा एंजियोग्राफी रूम में या रूम के पास टी, बिस्किट या फिर ओरल ग्लूकोज अवेलेबल रहना चाहिए। ये एफएफए मशीन है, दिस इज द रेगुलर एफएफए मशीन वेयर यू हैव अ व्यूइंग पॉइंट, the doctor can see and then the patient is seeing into a lens. So there is a viewing camera available for the doctor. This is the most common one which was available. अभी के नए मशीन्स है, यहाँ पे हम डायरेक्टली स्क्रीन पे देखते हैं और एंजियोग्राफी करते हैं। there is no viewpoint for the doctor. Okay, only the patient is looking into the lens and we are doing the angiogram looking at the screen. These are the newer machines which have come. Fundus pictures ऐसे दिखते हैं। You have usually you should know how, as a counselor you should know if a file comes to you, what procedures have been done before, या फिर प्रोसीजर करने के बाद जो रिपोर्ट्स हम देते हैं वो कैसे दिखते हैं। ये फंडस पिक्चर्स हैं, ये फंडस पिक्चर्स ऐसे दिखते हैं, यूजुअली कलरफुल रहते हैं फंडस पिक्चर्स। एफएफए पिक्चर्स ऐसे दिखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, तो एफएफए अगर किया हुआ है पहले, सी आइडियली वी डोंट रिपीट द एफएफए वेरी इमीडिएटली, एटलीस्ट 3 महीने के बाद रिपीट करते हैं। 3 महीने से पहले यूजुअली वी रिलाई ऑन व्हाटएवर द प्रोसीजर्स हैव बीन डन बिफोर, सो we don't do this procedure on and off. अगर 2 महीने पहले रिपोर्ट किया हुआ है तो हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, we will wait. अभी जो नया मशीन आया है ये है OCTA, exactly like your optical OCT मशीन की तरह ही दिखता है, OCT एंजियोग्राम मशीन।
और उसके रिपोर्ट्स ऐसे दिखते हैं, सेम ब्लैक एंड व्हाइट, बट बहुत ही डिटेल दिखते हैं, लाइक जस्ट लाइक योर लीफ, समथिंग लाइक अ लीफ, लीफ में जो ब्रांचेस रहते हैं वैसे दिखते हैं पिक्चर्स। ओके, सो एंजियोग्राफी के बाद the next most procedure, most common procedure is lasers. Okay, lasers in retina. Okay, lasers in retina are very very common. This is this is done in and out. Lasers, लेजर्स में 3 तरह के लेजर्स हम कॉमनली यूज करते हैं, ग्रीन लेजर, येलो लेजर एंड रेड लेजर, एंड देन एंडो लेजर. Red laser is also used as endo laser. Inside the OT, whatever we use is endo laser, that is the red laser. And otherwise in the OPD, whatever laser we are using, it is a yellow laser or a green laser. Yellow laser is more preferable than green laser. लेजर करने से पहले लेजर के लिए भी कंसेंट लेना पड़ता है. लेजर के कंसेंट फॉर्म में कौन सा, अभी लेजर 360 रेटिना जो है हम लेजर करना चाहते हैं, तो द डॉक्टर वुड सजेस्ट इन विच एरिया, आफ्टर डूइंग द एंजियोग्राम ही वुड कम टू अ कंक्लूजन in which part of the area of the retina he wants to do the laser. So he would have marked that area. So that area has to be mentioned in the consent form. ओके, तो अगर 360 डिग्रीज अगर हम एक ही जगह पे कर रहे हैं, like only one quadrant, if you divide the whole retina into 4 quadrants, the nasal and the temporal, superior and the inferior, 4 quadrants divide करते हैं, तो एक ही quadrant में करना है लेजर, तो वो एक सिटिंग में हो जाता है. अगर 360 degrees, all the 4 quadrants the doctor wants to laser, he can't do it in one sitting, because laser itself is a little painful procedure, and it's not very tolerable if you do more than one quadrant. ओके, तो इसलिए मिनिमम 3 या 4 सिटिंग चाहिए रहता है लेजर, रेटिनल लेजर्स करने के लिए. तो जब हम कंसेंट फॉर्म लिखते हैं और अगर डॉक्टर ने लिखा हुआ है 360 डिग्री या पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन इन 3 और 4 सिटिंग्स, तो कंसेंट फॉर्म हर बार हर सिटिंग में आपको कंसेंट फॉर्म लेना पड़ता है, या फिर यू विल हैव टू हैव अ कॉमन कंसेंट फॉर्म वेयर यू आर मेंशनिंग दैट विद अ पर्टिकुलर डेट एंड द सिटिंग्स, इतने सिटिंग्स होंगे, इतना इस तारीख पे होंगे और इस क्वाड्रेंट पे लेजर होगा. So either you have a single consent form where you are mentioning all the dates and which quadrant will be done on which date, or else every time the laser is being done, you will have to take a separate consent form. Okay, so green laser or yellow laser are the most preferred ones now. अभी अब तक हम सिंगल स्पॉट करते थे, मतलब स्लिट लैम्प पे बैठाने के बाद लेंस यूज करते हैं, लेंस डालने के बाद द डॉक्टर यूज लेजर मशीन से अटैच रहता है स्लिट लैम्प, तो सिंगल शॉट लाइक हर क्लिक पे सिर्फ एक ही स्पॉट पड़ता है, तो उसको हम सिंगल स्पॉट लेजर बोलते हैं. अभी नया लेजर्स आया है जहाँ पे हम मल्टीपल स्पॉट कर सकते हैं, उसको पास्कल लेजर बोलते हैं. तो मल्टीपल स्पॉट से काम जल्दी हो जाता है, बट स्टिल इवन इफ मल्टीपल स्पॉट्स आर अप्लाइड, स्टिल यू आर गोइंग टू डू ओनली वन क्वाड्रेंट इन वन सिटिंग, नॉट मोर देन वन क्वाड्रेंट. जब हम मैक्युला पे लेजर करते हैं, वहां पे हम हर तरफ लेजर नहीं कर सकते, बिकॉज मैक्युला इज वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया. वहां पे हम सिर्फ फोकल लेजर करते हैं, मतलब जहां पे ब्लीडिंग हो रहा है सब वहां पे सिर्फ एक स्पॉट लेजर पड़ता है, तो इसलिए हम उसको फोकल लेजर बोलते हैं. पहले मैंने जैसे बोला था, स्लिट लैम्प असिस्टेड इज द वेरी कॉमन प्रोसीजर, एंड देन आईडियो असिस्टेड. आईडियो असिस्टेड नेचुरली इन किड्स यू कांट डू इट ऑन द स्लिट लैम्प, तो आईडियो चाहिए आरओपी के लेजर के लिए. और अडल्ट्स में भी बहुत पेरिफेरी तक हम लेंस डाल के नहीं देख सकते, इसलिए स्लिट लैम्प में भी पेरिफेरल एरियाज को पकड़ने के लिए हमको मुश्किल होती है लेजर करना, तो इसलिए हम आईडियो यूज करते हैं. दिस इज द स्लिट लैम्प लेजर. Here, the patient will be sitting comfortably on the chin, comfortably sitting with his chin on the chin rest and the head to the attached to the slit lamp. हम ऐसा वाला lens use करते हैं. The lens will sit on the cornea. There will be a visco in between, and then the slit lamp is attached to a laser console. From there, either with the
either there will be a foot pedal control or there will be a slit lamp control here where we can just click there. Okay, with each click single spot comes. So single spot procedure is very common because speed bhi hum adjust kar sakte hain. Not everybody has multi spot laser. Not everyone will have a multi spot laser. So single spot lasers are very common. ये पेशेंट लेटा रहता है और ये आईडीओ मशीन है. द आईडीओ मशीन इज अटैच टू द लेजर कंसोल. तो यहाँ से लेजर पड़ते हैं आईडीओ से. ये खड़ा होके करना पड़ता है. दिस इज रियली वेरी हेवी. दिस इज द लेजर कंसोल. green laser or yellow laser because they are very very safe in the eye, and the yellow laser comes under micropulse laser. Okay, अभी यहाँ पे जो सिंगल स्पॉट लेजर है, यहाँ पे जो स्पॉट्स दिए गए हैं, these are fresh laser marks. Some of the institutes, what they do after each laser sitting, wherever the laser is done after 5-10 minutes, they do take a picture and give it as a proof to the patient that yes, this part of your retina is lasered. जहाँ पे लेजर किया जाता है उसका फोटोग्राफ निकाल के दिया जाता है कुछ इंस्टीट्यूट्स में. ये लेजर होने के बाद 2-3 महीने के बाद यही लेजर मार्क्स स्कार्स बन जाते हैं ऐसे. जो मल्टी स्पॉट लेजर बोला मैंने, some of the centers may be having Pascal laser or the multi-spot laser. Multi-spot laser, it eases the work for the doctor. The advantage is that multiple spots पड़ते हैं और regularized, like they fall like the laser spots are given on the patient's retina just like a geometric pattern. तो एक पैटर्न क्लियर हो जाता है. सो एनी टाइम यू सी अ पिक्चर यू कैन मेक आउट वेदर इट इज अ पैस्कल लेजर और अ सिंगल स्पॉट लेजर. सिंगल स्पॉट लेजर, यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये वाला ये सिंगल स्पॉट लेजर है, एक क्वाड्रेंट में किया हुआ, दूसरे क्वाड्रेंट में मल्टी स्पॉट लेजर पड़ा है. सो यू कैन आराम से डिफरेंशिएट based on the pattern of the scan or the photograph, whatever you are seeing, कि पैस्कल लेजर किया गया था पहले या सिंगल स्पॉट लेजर किया गया था. Laser में the only thing that you have to remember is once the laser is done, you will have to put the patient, there will be mild pain. एक सिटिंग और दूसरे सिटिंग में गैप रहेगा हमेशा एक हफ्ते का. Why we need that gap? Because once we laser, we are inducing inflammation. तो थोड़ा पेन रहेगा, थोड़ा हीलिंग होने के लिए एक हफ्ता लगेगा. तो we never do laser. At least a gap of 4-5 days is always given between one sitting to another sitting. That much you have to remember. तो 3-4 सिटिंग लेजर करना है एक आंख के लिए. दोनों आंख में एक क्वाड्रेंट एक साथ कर सकते हैं. So even if you want to cover all the 4 quadrants in a one particular patient, then you will need at least 3 to 4 weeks. मतलब एक महीना या 1.5 महीना या 2 महीना तो लग ही जाता है. एक हफ्ते का गैप देते हैं दोनों आंख में लेजर कंप्लीट करने के लिए. तो patient will be on NSAIDs for at least 1 or 2 months in both the eyes. पलैट या फिर फ्लर्बिप्रोफेन. This photodynamic therapy, it is usually done in IPCV. IPCV में हम वो पॉलीपॉइडल कोरोइडल वैस्कुलेचर बोलते हैं हम. उस वहां पे जहां पे लेजर करना है, एक पॉलिप रहता है, वो पॉलिप को हिट करना रहता है. तो इसलिए वो इट्स नॉट अ रेगुलर लेजर. तो इसलिए हम डाई यूज करते हैं. एक डाई है उसको हम वर्टिपॉर्फिन बोलते हैं, और the commercially available dye, that is Visudyne. तो Visudyne इंजेक्ट करने के बाद वो लेजर से एक्टिवेट होता है. तो वो एक्टिवेट होने के बाद हम वो पॉलिप के ऊपर एग्जैक्टली
लेजर करते हैं। वो जो लेजर यूज करते हैं हम वहां पे, वो डायोड लेजर है, दैट इज अ रेड लेजर और द थर्मल लेजर. The only thing what you have to remember as a counselor in PDT procedure is that जब भी PDT procedure advise होता है, patient को advise करना पड़ता है आपको कि after the procedure is done, the patient will not be able to tolerate the light, not only the daylight but also the artificial lights. तो इसलिए patient has to wear something like a burqa, like cover whole of their body as well as their face for at least 1 or 2 days. तो कभी कभी 3-4 दिन के लिए भी डार्क में रहना बेटर है, because the dye is that sense, because the dye makes the patient very sensitive, photosensitive to the light, both for artificial light as well as the natural light. तो यही एक बात आपको इस प्रोसीजर में याद रखना है as a counselor. That there is a dye there for a polypoid choroidal vasculature. There is a different procedure, the dye which is used, that causes photosensitivity. So the patient has to be advised to avoid both artificial light as well as the natural light for at least 24 to 48 hours, yes, maximum 72 hours. So that is the only thing that you have to remember. This drug is very costly. This costs somewhere around 75,000. तो करने से पहले बहुत सोच समझ के करते हैं, और करने के बाद बहुत, करते वक्त, करने से पहले या करने के बाद भी बहुत केयर लेना पड़ता है. Now, the next common procedure which we do in retina is intravitreal injections. As I told you, intravitreal injections, it's a procedure where a drug is introduced inside the eye through the sclera into the vitreous cavity. So most of the intravitreal injections are given with 26 gauge needle, या फिर 27 gauge needle, या 30 gauge needle. Okay, तो consent यहाँ पे, as I told you, consent is also important. Consent में you will have to write what is the drug that the doctor has prescribed for that particular patient. It may be any drug. I'll show you the list of the drugs which are commonly used. The procedure, once it is decided, the consent form has to be taken, and as I told you before, which eye, कौन से आंख में इंजेक्शन दे रहे हैं, that is very important. Which eye the eye ka diagnosis, right eye, left eye, it is very important to note the diagnosis and in which eye the doctor wants to give the injection. Okay, तो जिस दिन भी इंजेक्शन के लिए पेशेंट आता है, वो उस दिन pupil has to be dilated, as well as you need to check whether the sac area is clear. Like अगर कुछ discharge है sac area में, या फिर conjunctival congestion है, या फिर डिस्चार्ज है, तो वो प्रोसीजर हम नहीं करते हैं इंट्राविट्रियल इंजेक्शन, बिकॉज एनी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन on the day of intravitreal injection, we take it very seriously even if it is mild, तो हम avoid करेंगे. तो on the day of surgery, on the day of giving intravitreal injection, the eye has to be absolutely clear. Like lids में blepharitis नहीं होना चाहिए, sac area should be very clear, conjunctiva should be clear, there should be no discharge. These are the things which have to be checked pre-operatively, either by the resident doctor or by the counselor. तो इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस में मोस्ट कॉमनली गिवन इंजेक्शन इज स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स में इंट्राविट्रियल ट्रायम्सोलोन और या केनालॉग बोलते हैं, या फिर नाउ यू हैव प्रिजर्वेटिव फ्री IVTA which causes less reaction. Okay, and then you have in steroids you have the zone implant, that is Ozurdex. This is just a list of common drugs which are given inside the eye. The list is not extensive, but this is the most one. Bevacizumab, that is Avastin, which we use commonly for diabetic macular edema या फिर diabetic retinopathy. Ranibizumab also. Aflibercept was basically started using with ARMD. Roluzumab is the newest drug. Triamcinolone, IVTA, it is actually off-label. Most of the anti-VEGFs are FDA approved except for bevacizumab.
Ganciclovir is a antibiotic, antiviral basically. Clindamycin, foscarnet, formiversin, methotrexate, vancomycin, ceftazidimide, amikacin, amphotericin, voriconazole, and dexamethasone. See, why this is the minimum list. There are only 10 or 15 drugs which we use inside the eye, but you have to be aware that these are the only ones. There is nothing else. Okay. Steroids में Kenalog जो है, Kenalog is available as 10 mg, 20 mg and 40 mg. Okay. Triamcinolone हम usually 2 milligram या 4 milligram देते हैं 0.5 ml में या फिर 1 ml में. ये इंजेक्शन का साइट रहता है. ये 26 gauge needle because Kenalog जो है या Triamcinolone जो है वो precipitate होता है. वो व्हाइट कलर मटेरियल का रहता है. इट इज नॉट अ लिक्विफाइड मटेरियल, तो थोड़ा थिक रहता है, तो इसलिए 26 gauge needle is most commonly used. Once the drug is given inside the eye, this is how it looks, you know, and then after the procedure is done, it remains there inside the eye as a white precipitate, yeah, yellowish white precipitate for a long time. For Kenalog like Triamcinolone to completely disappear, it will take at least 3 months. No, to completely disappear it will take 3 months. तो इसलिए एक बार अभी IVTA दे दिया तो अगला प्रोसीजर कब होगा? If at all the patient needs one more injection of Triamcinolone, it will be always done after 3 months, never before that. That is the drug which is available, that is in the injection form. Now Ozurdex is an implant. Triamcinolone is different, dexamethasone is different. Dexamethasone is more potent, and it is available as it is being made available as an implant, like a pellet. अभी हम एक if you know how a pencil would look like, you know, that just like a pencil inside your pen, that the Ozurdex implant is there. You know, the implant will be placed, it is hardly less than 0.1 या 0.2 millimeter का रहता है. वो implant inside the eye, it will be seen like this. It will be seen like a pellet. And this also remains inside the eye minimum for 3 to 4 months. Sometimes it disappears very fast, but the effect most of the time remains for 3 to 4 months. अभी intravitreal injection देने के बाद it's not only IVTA, but more common with IVTA is floaters. IVTA देने के बाद, as I told you, because the Triamcinolone is in the form of a white precipitate, it will be always perceived by the patient. Once he goes out into the light or against a white background, he will always see it as floaters, like हाँ आँख के अंदर कुछ है, काला काला सा दिखेगा उसको. As it disappears, the floaters go on decreasing. This is how a floater would appear for him, or after any intravitreal injection for that matter. Now, just some common difference between IVTA and the implant. अभी IVTA है, IVTA भी है और implant भी है. तो किस patient को IVTA बोलना है या किस patient को dexamethasone बोलना है? Most of the time the doctor decides. But in general, you should know that IVTA जो है, वो एक vial में आता है. तो multi-dose है, like, you know, whatever the drug is available, it can be used for more than one patient. So that is why it is called as multi-dose vial. And where एक बार अगर एक वायल ओपन कर दिया IVTA का, you will have to use it within a month. So the purchase cost of IVTA is somewhere between, depending upon the companies, it is 500 rupees to 1200, and most of the duration of action is 3 months. Steroid induced glaucoma का risk IVTA में ज्यादा रहता है. Cataract formation, अगर हम repeatedly IVTA दे रहे हैं, like then the tendency to form cataract, steroid induced cataract, is also more with IVTA. The dose is usually 2 milligrams, yeah, 4 milligrams. Whereas to overcome the side effects of the IVTA, that is when the dexamethasone implant came, especially for
chronic diabetic macular edema and vein occlusions where the macular edema is very chronic. अगर पेशेंट का उम्र ज्यादा है, imagine there is a patient who is 65 years old and they can't walk, you know, and there is macular edema. So the doctor decides that instead of calling the patient again and again and troubling the patient again and again, I would like to go for a dexamethasone implant because it is single dose implant. एक patient के लिए एक implant डलता है. The cost is high, but the duration of action is for 4 to 6 months. The patient does not have to come again and again. The risk of steroid-induced glaucoma is relatively less compared to IVTA, and the cataract formation tendency also is less with dexamethasone implant. Cost difference बहुत ज्यादा है. अगर patient affordable है and he exactly fits into the criteria of dexamethasone implant, then dexamethasone implant gives very good results. Implant का purchase cost ही 25 to 30K पड़ता है. Then intraoperative charges और surgeon charges add होते हैं. Then we are moving on to anti-VEGFs, that is vascular endothelial growth factors, उनके against act करने वाले drugs. Okay, so these anti-VEGFs are most commonly used in diabetic patients as well as old age patients who are having age-related macular degeneration. Age-related macular degeneration दो तरह के होते हैं, dry और wet. Wet में bleeding होता है, इसलिए उस न्यू वेजल्स से जो ब्लीडिंग होता है उसको स्टॉप करने के लिए एंटी-VEGFs यूज करते हैं. Okay, now the common criteria for all the patients who have been advised anti-VEGF is any patient who has hypertension which is on the higher side, severe side. Hypertension is divided as severe, mild, moderate. Okay, तो severe hypertension जिसको भी है, मतलब ड्रग्स से भी उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस पेशेंट में हम anti-VEGF नहीं देंगे. If the patient is having blood pressure which can be diagnosed at the time of seeing the patient, or the patient may be using the medications irregularly, but if the patient's hypertension is not controlled, then we are not giving anti-VEGF immediately to that patient. You know, you have to remember this. अगर patient को स्ट्रोक हुआ है, especially if the stroke is very recent, 1 month है, 3 महीने हुए हैं स्ट्रोक होने के बाद, या फिर 6 महीने हुए हैं, usually we avoid anti-VEGFs. Okay, anti-VEGFs क्या स्ट्रोक में अगर देना है anti-VEGFs तो हम usually 1 साल के बाद ही देते हैं. So unless and until the patient is having if the patient is having a history of stroke, then या फिर paralysis का history है, तो paralysis का history है and the patient is already having a paralyzed part, like you know hand या leg वो move नहीं कर सकता, तो उस patient में हम anti-VEGFs नहीं देंगे. We preferably give steroids. Okay, anti-VEGFs अगर स्ट्रोक हुआ है but the patient is overall well, but history 1 महीने का है, 3 महीने का या 6 महीने का है, तो still avoid. You prefer anti-VEGFs only after a year of the episode. Okay, and then हार्ट अटैक हुआ है, वो भी रिसेंटली हुआ है, तो अवॉइड करेंगे एंटी-VEGF. और अगर पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसी है, लाइक यू नो एनी ल्यूकीमिया या फिर कैंसर है या फिर चाइल्डहुड में हीमोफीलिया बोलते हैं वो टेंडेंसी है, तो हम एंटी-VEGFs नहीं देंगे. Okay, so these are the only though anti-VEGFs are used in and out nowadays, but you should have a strong vigilance, especially above the age of 55, 60, and you should purposefully ask whether there is a history of stroke or MI, and if they are on most of them would be on hypertensive medications, so you have to cross check whether the medications are working for them or not, you know, and only then go ahead. And then locally अगर blepharitis है, congestion है, discharge है on the day of injection, as I told you before, any intravitreal procedure will be avoided. Okay, then one thing which you have to remember with anti-VEGFs is that diabetic macular edema में the frequency with which we give the injections is different, and ARMD अगर है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, वो भी वेट ARMD है, तो उसका इंजेक्शन, दो द इंजेक्शन इज कॉमन फॉर बोथ द कंडीशंस, द फ्रीक्वेंसी इन विच वी गिव इट टू द पेशेंट इज डिफरेंट. डायबिटिक मैकुलर एडिमा में मैक्सिमम
3 इंजेक्शंस पड़ते हैं, वो भी मैकुलर एडिमा हील होने तक वो देख देख के इंजेक्शन देते हैं। एक बार दिया तो अभी एक दिया तो अगले महीने देना ही है, ऐसा कंपलसरी नहीं है डायबिटिक मैकुलर एडिमा में, तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। बट ओवरऑल डायबिटिक मैकुलर एडिमा at one particular episode we don't give more than 2 or 3 injections, whereas with wet ARMD या फिर एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन में हम महीना महीना देते हैं इंजेक्शन, उसका प्रोटोकॉल अलग है। मिनिमम 3 इंजेक्शन महीना महीना पड़ेगा। उसके बाद अगर डॉक्टर डिसाइड करता है कि कंटिन्यू करना है तो वो कंटिन्यू होगा, या फिर कंटिन्यूअसली कुछ सेंटर्स में कंटिन्यूअसली पूरा वो ARMD पूरा स्कार होने तक 8 महीने के लिए कंटिन्यूअसली 8 महीना देते हैं, महीना महीना इंजेक्शन। तो ARMD के लिए प्रोटोकॉल अलग है और डायबिटिक मैकुलर एडिमा के लिए प्रोटोकॉल अलग है। दो द इंजेक्शन में भी कॉमन, लाइक Avastin, Lucentis, Macugen, Eylea, these are the same drugs which are used in both the conditions, but the only difference is the frequency, when to give and how much to give. Then comes retinopathy of prematurity. Retinopathy of prematurity, it's a condition which we see in newborns. ROP में ये commonly use होता है, उसका dose adult dose से half होता है या 1/3 होता है. The procedure is similarly done, but it is done under anesthesia, short GA या फिर local anesthesia में नहीं करते हैं, short GA में करते हैं. And very commonly we use now anti-VEGFs post pre-operatively. That is pre-operatively कब? अभी diabetic retinopathy का surgery post हुआ है, pars plana vitrectomy, because we want to stop the bleeding, excessive bleeding inside the eye during the surgery. Now it has become a very common procedure to give Avastin or anti-VEGF 1 week prior to the surgery. तो अगर डायबिटिक रेटिनल डिटैचमेंट, वो भी डायबिटिक रेटिनल डिटैचमेंट, डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए सर्जरी अगर एडवाइस हुआ है और उसके लिए प्री ऑपरेटिवली अगर इंजेक्शन बोला गया है, तो आपको वो इंजेक्शन 2 या 3 दिन पहले पोस्ट करना पड़ेगा या फिर 1 हफ्ता पहले पोस्ट करना पड़ेगा। मतलब अभी आज अगर इंजेक्शन दिया है तो इमीडिएटली आफ्टर 3 days you should post the patient for the surgery, or else or after 1 week, depending upon whatever the doctor suggests. The purpose of giving anti-VEGF before the surgery is to reduce the bleeding. तो इसलिए हमेशा पेशेंट को बताना पड़ता है कि ये इंजेक्शन ऑपरेशन करते वक्त ब्लीडिंग कम हो इसलिए दे रहे हैं, तो इसलिए they should not postpone the surgery after giving the injection. The surgery has to be done after 3 days or after 1 week. इंट्राविट्रेल इंजेक्शंस में कॉमनली जो केयर लिया जाता है, मल्टीपल टाइम्स वी यूज्ड 5% povidone iodine. Like once the patient comes inside your OPD and is being posted for anti-VEGF, the eye is cleaned and we use the topical Paracaine, that is topical anesthesia, and we put 5% iodine. Like अगर 3 घंटे के बाद अगर प्रोसीजर है तो हर 1 घंटे में 1 ड्रॉप पोविडोन डाला जाता है, outside the OT also, and inside the OT also 2-3 times povidone iodine is used because it is a antiseptic as well as it keeps the eye sterile during the procedure. The 5% povidone कुछ सेंटर्स में इंजेक्शन देने के बाद भी 2-3 दिन के लिए 2 या 3 बार डालने के लिए दिया जाता है povidone iodine if they don't want to give antibiotic drops. Now, anti-VEGFs may, as a counselor, what you should know is, and naturally the doctor would have suggested already which drug he wants to go for the patient. It could be Avastin or Lucentis or Macugen or Eylea. As a counselor, all you have to know is Avastin, most of the centers may, it is ग्रुप में दिया जाता है, like you accumulate a patient of 5 patients, 10 patients या 15 patients and then do it on one particular day, because एक वाइल अगर ओपन होता है तो उसको हम 1 महीने के लिए ही यूज कर सकते हैं, या फिर in some centers they just open one vial once and then they don't use it at all. तो मल्टी डोज वायल है तो इसलिए you can use 1 vial of Avastin. I think usually you can use it for at least 30 to 40 patients. तो हर हफ्ते में 10 पेशेंट पोस्ट करके Avastin यूज किया जाता है. It is a multi-dose vial. The only disadvantage with Avastin is it is not FDA approved. Purchase cost
is very affordable. It works out for both for the patient as well as the doctor. 35K पड़ता है. Whereas Lucentis is single dose vial. Single dose vial मतलब एक बार अगर हम ओपन करते हैं तो उसी दिन उसको यूज करना पड़ता है, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते. Lucentis is available as single dose as well as multi dose, like 2-3 पेशेंट के लिए भी यूज किया जाता है सिरिंज बदल के, या फिर सिंगल डोज सिंगल पेशेंट, that is Accentrix which is available. Then Macugen, or Macugen is usually used in ARMD. It is not many people use it for diabetic macular edema. Macugen का cost बहुत ज़्यादा है, 40K to 45K. Then we have the newest drug, that is the Eylea. Eylea is also single dose drug. That is also 40K to 60K. That is the purchase cost I'm telling. That is the Avastin, what you're seeing here. 100 mg. As I told you, it can be, ये 4 ml का है, and we use only 0.1 ml या 0.2 ml. तो 4 ml मतलब you can आराम से use it for 30 या 35 patients. Okay. तो Lucentis या फिर ranibizumab, this is the Accentrix one. This is Macugen and this is Eylea. These are all single dose. Like एक बार एक patient, बस उतना ही है. इसको स्टोर नहीं कर सकते, आज ओपन किया तो आज ही यूज करना पड़ेगा. Then the most common condition, not very common but commonly done procedure, endophthalmitis होता है तो antibiotics ही देना पड़ता है, and this has to be given immediately. तो consent form हमेशा endophthalmitis का, you don't know which patient will come when. For emergency also it should be available, especially the drugs cephalosporin, vancomycin, amikacin and voriconazole. Antibiotics में these are the more ये dose आपको पता रहना है कि जरूरत नहीं है, but cephalosporin, vancomycin, amikacin, voriconazole, these are the most common drugs which are used for endophthalmitis, and it should be made available for emergency use. Consent form में ये लिखा हुआ endophthalmitis के लिए separate consent form with the name of the drug should be typed so that you can just go immediately and do it. Then we will move on to the surgeries. Posterior segment में जो surgeries होते हैं, the whatever I told you in the first slide, pars plana vitrectomy, 3-port pars plana vitrectomy, then plain vitrectomy जो vitreous hemorrhage और एंडोफ्थेल्मिटिस के लिए करते हैं, सिर्फ विट्रेक्टमी करते हैं, वहां पे सिर्फ विट्रियस निकालेंगे, या फिर आरडी के लिए सर्जरीज करेंगे, या फिर डायबिटिक मैकुलर एडिमा या डायबिटिक ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट के लिए करेंगे, वो सर्जरीज होते हैं. तो या फिर मैकुलर होल सर्जरीज या फिर मेम्ब्रेन सर्जरीज. तो 20 gauge सर्जरीज विद वेरी कॉमन सर्जरीज व्हिच वी हैव डन since ages. Now also, if you are not having access to very high-end instruments, small the MIVS, that is micro incision vitrectomy surgeries, if you are not having access, then 20 gauge surgeries are the most commonly done surgeries. The only thing is this is cost effective also. 20 gauge surgeries यहाँ पे सिर्फ हमको एक MVR ब्लेड चाहिए रहता है और 3 पोर्ट्स बनते हैं. The only disadvantage here is that यहाँ पे सुचर लगता ही है. Just vicryl sutures लगेंगे. The vicryl sutures will heal on themselves in 1 month या 2 months. Okay, so 20 gauge surgery is done with MVR blade and sutures पड़ते ही हैं, 3 तो पड़ेंगे ही vicryl sutures के, और the sutures will dissolve by themselves in 2 or 3 months. The newer surgeries which have come are smaller gauge surgeries. मतलब the opening what we make is smaller than the 20 gauge. So 23 gauge is smaller than 20 gauge, 25 gauge is smaller than 23 gauge, and 27 gauge is smaller gauge than 25 gauge. Okay, all 23, 25, 27, all the 3 are sutureless surgeries. Like most of the time, unless and until operation करने के बाद अगर हमको लगता है कि suture नहीं चाहिए, most of the time 75% of the times the doctor will not put the suture, but अगर लगता है तो एक ही टाका लगेगा. Even though it is sutureless, अगर लगना भी है तो एक ही लगेगा.
ठीक है। द ओनली थिंग इज 25, ये 20 गेज की तरह एक ही ब्लेड में नहीं होता है। यहाँ पे तीन, यू नीड अ ट्रोकार एंड यू नीड 3 पोर्ट्स विच आर डिस्पोजेबल। तो इसलिए सुचरलेस सर्जरीज थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं, बिकॉज दे आर डिस्पोजेबल एंड यू नीड ट्रोकार एंड यू नीड अ 3 पोर्ट्स, यू नो, टू मेक दैट। तो इसलिए वो डिस्पोजेबल रहते हैं और स्मॉलर गेज के हैं, एंड एक पेशेंट में यूज किया हुआ दूसरे पेशेंट में यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है पेशेंट के लिए। the biggest advantage is that it happens faster because the smaller gauge instruments में जब पोर्ट साइज छोटा है तो इंस्ट्रूमेंट साइज भी छोटा रहेगा, और हमारे पास जो कटर रहेगा वो फास्ट रहता है, यूजुअली 10,000 कट्स का रहता है, तो इसलिए सर्जरी भी फास्ट होता है। The surgery happens fast, the surgeon comfort zone is fast, the healing procedure for the patient is also fast with sutureless. The only thing is it becomes more expensive than your 20 gauge. This will be the cutter size, you know, the regular हम 20 gauge जो suture डालता है उसमें cutter S size का रहता है, 23 में वो छोटा हो जाता है, 25 और 27 में और छोटा हो जाता है। जब कटर का साइज छोटा हो जाता है तो कटर का स्पीड बढ़ जाता है। 20 गेज में हम यूजुअली 5000 कट रेट में करते हैं, 23, 25, 27 में 10,000 कट रेट में करते हैं। 8,000 मिनिमम, 8,000 तो मिनिमम रहता है, तो फास्ट हो जाता है सर्जरी। Now these are the trocars. Trocar will help us to create the 3 ports. Yeah, they have given the color code. Usually the orange is 23 gauge, blue is 25 gauge, and the purple one is 27 gauge. You know, तो ट्रोकार सेपरेटली मंगाना पड़ता है, हर पेशेंट के लिए डिस्पोजेबल रहेगा वो, तो that is how it is. You know, ये ट्रोकार से पहले हम पाथ क्रिएट करते हैं, पाथ क्रिएट करते वक्त ही ये पोर्ट वहां पे बिठाया जाता है। पोस्टीरियर सेगमेंट सर्जरी में जैसे मैंने बोला था कि आरडी सर्जरी करते वक्त हम ऑयल डालते हैं, तो ऑयल अगर डालते हैं तो उसका देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स विच आर अवेलेबल। द प्राइसिंग में नॉट बी वेरी, द प्राइसिंग में डिफरेंस नहीं रहता है, बट एज अ काउंसलर यू शुड नो दैट which oil is the doctor putting. Is he putting 1,000 centistokes or 1,500 centistokes या फिर 5,000 centistokes, you know, because सिलिकॉन ऑयल रिमूवल करते वक्त इतना ऑयल, जब ऑयल डालने में और ऑयल निकालने में the effort that is put is different with 1,000, 1,500 and 5,000. So the cost difference is also there, but in the end of the day it has to be noted on the consent form and in the operative notes that, you know, this was the oil which was put, you know, like okay, आरडी सर्जरी हुआ है इस पेशेंट का, इसमें ऑयल डाला हुआ है, कौन सा ऑयल डाला है, 1,000 सेंटीस्टोक्स का डाला है या 1,500 का डाला है या 5,000 सेंटीस्टोक्स का डाला है, वो काउंसलर को पता रहना चाहिए, या फिर डॉक्टर जो है उसके नोट्स में तो रहना चाहिए ये। This is the silicone oil, 1,000 centistokes. This is 1,500. This is 5,000. No, cost actually 1,200 rupees पड़ता है एक while. 1,200 to 2,500 शायद purchase cost, या 3,000 तक पड़ता है। Similar to silicone oil, there is something called as PFCL. ये PFCL जो है usually हम आंख ऑपरेशन करते वक्त यूज करते हैं PFCL. It is a little bit more expensive and it is highly evaporative. तो इसलिए हम उसको आंख में के अंदर छोड़ नहीं सकते। तो this is one cost. PFCL का cost अगर इंट्रा ऑपरेटिवली अगर यूज किया हुआ है तो पेशेंट के चार्जेस में एक्स्ट्रा पड़ते हैं PFCL। मेम्ब्रेन अगर मैकुलर होल है या ट्रैक्शनल मेम्ब्रेन्स है तो उसको रिमूव करने के लिए द डॉक्टर यूजेस ब्रिलियंट ब्लू या ट्रिपैन ब्लू।
यू नो सो जो भी पोस्टीरियर सेगमेंट में एक्स्ट्रा यूज होता है, डाई हो या ऑयल हो या गैस हो, जो भी हो, पीएफसीएल हो, उसका कॉस्ट पता रहना चाहिए, और अगर डॉक्टर ने यूज किया हुआ है तो वो बता देगा आपको, बिकॉज दोज आर द चार्जेस विच विल गेट एडेड इन द patient's this, and that is the reason why you should know as a counselor that okay fine, this was used costing के लिए. नाउ अगर हमेशा ये याद रखो एज अ काउंसलर कि ऑयल डाला है तो गैस नहीं डलता है, और अगर गैस डाला है तो ऑयल नहीं डलता है. ओके, एंड ऑयल डाला है तो ऑयल रिमूवल के लिए 3 महीने या 6 महीने के बाद फिर से पेशेंट आएगा ही. अगर गैस डाला है तो कौन सा गैस डाला है, यू नो कभी कभी हम विट्रियस सब्स्टिट्यूट के लिए कुछ चाहिए नहीं रहता है, रेटिना वेल अटैच रहता है, लेजर किया रहता है, तो इसलिए कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, तो सिर्फ हम खाली हवा भरते हैं कभी कभी. हवा जो है दैट गेट्स रिप्लेस्ड विद द फ्लूइड, or it remains the vacuum remains just like that, or it may be replaced by mild fluid. The air whatever is put during the surgery, it gets dissolved in 5 to 7 days. 5 से 7 दिन में अगर ऑपरेशन करने के बाद आंख के अंदर सिर्फ हवा, जो प्योरिफाइड एयर है, वो फिल्टर से लेते हैं, और आंख में एयर भरा हुआ है, तो you don't have to worry anything. It will be there for 5 to 7 days inside the eye. अगर गैस भरा है, प्योर गैस भरा है, SF6 हो या C3F8 हो या C2F6 हो, आपको पता रहना चाहिए कि वो प्योर फॉर्म में भरा है, लाइक 100% प्योर गैस डाला हुआ है या डाइल्यूटेड डाला है, 20%, 16% या 12% डाला है. Because what happens, these gases SF6, C3F8 and C2F6, these gases when they are put inside the eye, they expand, you know, they are expandable gases, you know, and अगर प्योरेस्ट फॉर्म में अगर डाला है तो वो एक्सपैंड बहुत जल्दी होते हैं, और अगर डाइल्यूटेड डाला है तो धीरे धीरे एक्सपैंड होते हैं. SF6 remains in the eye for 10 to 14 days. C3F8 remains in the eye for 55 to 68 days. C2F6 remains in the eye for 30 to 35 days. ये क्यों पता रहना चाहिए? As a counselor, whenever a patient is posted for retinal surgeries and the doctor has already decided that he wants to put the gas, then it is your duty to tell the patient that for so many days he or she cannot travel by air. Okay, that is very, very important, because when we put these gases like SF6, C3F8 and C2F6, because they expand, जब वो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, it expands all the more faster and it causes increased intraocular pressure, एंड इससे गैस डलने से और जल्दी से एक्सपैंड होने से और फ्लाइट पकड़ने से, व्हेन द पेशेंट गोज इन अ हायर अल्टीट्यूड, द वैक्यूम, the air, the pressure, the expansion capacity of that gas increases, because it is a vacuum there in the high altitude, so the expansion happens faster. तो इसलिए जब भी गैस डालते हैं पेशेंट में, कंपल्सरीली यू हैव टू रिमेम्बर दैट कौन सा गैस डालने वाले हैं. अगर SF6 डालने वाले हैं तो 10 to 14 days the patient should avoid air travel. प्लेन से ट्रैवल नहीं कर सकते, या फिर not only plane, he can't go on a trek, he can't go deep diving, you know, he can't go for swimming. Like anything which causes altitudinal difference in the pressure, altitude, height difference, या फिर pressure difference जो आता है, वैसे जगह पे नहीं जाना है, बहुत ऊंचाई पे नहीं जाना है, बहुत नीचे नहीं जाना है. Okay, so that is why you avoid trekking, you avoid swimming, and you avoid taking flights if the gas is put inside the eye. So SF6 डाला है तो 10 से 14 दिन केयर लेना है. C3F8 almost 2 months, you know, 2 months to 2.5 months. C2F6 डाला है तो 1.5 month. They should avoid airplane or traveling by air. This is what you have to remember as a counselor. This is how the gas is available in the cans. बहुत lightweight होते हैं. It is expensive. There is a filter. As soon as a filter is applied to the cans, it just fills up, and then with the same filter, it is pushed in through the tube inside the eye. So this is all you should know as a counselor. I think we can open up for questions.
Yeah, thank you so much, madam. It was a Yeah, wonderful session. I think I finished early. So we can open up for question answers. Participants, if you have any questions, you can unmute yourself. Mr. Hari, can we allow them to unmute themselves? Yes, sir. Let us allow them to unmute themselves if they want to ask. Yes, so any questions? You can raise your hand and then go ahead and ask the question. Yeah, by the time they open up and ask question, I have two questions. First of all, let me admit that, I mean, in personal sessions, wherever I conduct such sessions, I cover, these basics and advancements. Huh. But I was just talking to Dr. Senthil. It was a wonderful decision to involve ophthalmologist, and it was very nice of you three to come up and share your experiences and share your expertise with the group. Thank you so much. Yeah. My question is very commonly, I mean, you said usually a surgeon decides which anti-VEGF is to be, given. But many centers, they have two or three options. And then, they give patients these options. But then there is a cost difference. So Yeah. can you give your input? I mean, in such case, what difference in patient's term, our counselors can state that, I mean, let us say Avastin, you get this thing, and then the other injectables. See, now in anti-VEGFs, I told you that most of the anti-VEGFs are FDA approved, except for Avastin. Okay, so the risk factor is only with Avastin, only because it is not FDA approved, but it is very cost effective. Okay, now as I told you, there are two contraindications. Basically, a patient who has had a heart attack or patient has had a stroke, and there is an immediate need of giving anti-VEGFs. So in such situations, you have to go for a FDA approved drug. You can't go for Avastin. So that decision, like अभी मैंने बोला कि anti-VEGFs होता है तो avoid करो. स्ट्रोक हुआ है, एमआई हुआ है, 1 महीना हुआ है या 6 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, we try to avoid Avastin as much as possible. But if we feel that Avastin, I mean anti-VEGFs देना ही है, तो उस situation में even if the cost is high, they will have to go for Lucentis. Avastin cannot be given. No, but if you, okay, fine, because we know that the patient, like diabetic macular edema mein, I told you that maximum to maximum the patient will need is 2 or 3 injections, like एक episode में. लाइक अभी हुआ है मैकुलर एडिमा, तो उस एपिसोड को कंट्रोल करने के लिए 2 या 3 इंजेक्शंस चाहिए रहता है. सो इट इज ऑल अपॉन द अफोर्डेबिलिटी. Usually as a counselor and as a doctor, it is your duty to first suggest FDA approved drug, that is Lucentis, okay, or Accentrix for that matter. If you feel that yes, the patient is because when we are in the initial sitting only, we are going to tell that you may need multiple injections. How many injections you may need, we cannot tell, we will have to see it. So 2 या 3 injections लगेंगे, वो हम पहले ही बोल देते हैं. तो इसलिए it is open for them, yes, if the cost factor comes, only then the alternative is Avastin. But Avastin is also equally efficacious, but medico legal purpose की वजह से we have to first say FDA approved drug, as a counselor or as a doctor. Right. Yeah. Anybody has any question? Yes, I think Ms. Samaira Arora is raising her hand. Hello, good evening, ma'am. Hello.
मैम मुझे ये पूछना था कि ये जो स्टेरॉइड इंजेक्शंस होते हैं तो हाँ। इसमें क्या ग्लूकोमा या कैटरेक्ट बढ़ने का खतरा रहता है? Yeah, it is there. See, it does not happen. Steroid induced glaucoma can happen with the first injection itself. Okay. So थोड़े डॉक्टर्स क्या करते हैं, IVTA देने से पहले they try to find out whether the patient is steroid sensitive or not. How do they do that? What they do is they give topical steroids. टॉपिकल स्टेरॉइड्स दिन में 3 बार या 4 बार देते हैं, एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए. 10 दिन में अगर आईओपी वेरिएशन ज्यादा नहीं है, देन दे पोस्ट इट फॉर IVT. You know, so steroid induced glaucoma you can assess most of the times, like agar see usually what happens once the IVTA is given, immediately next day if a patient is having rise of IOP, then it is taken as steroid induced glaucoma and immediately the drugs are put, Dimox, tablet Dimox या फिर Timolol डाल दिया जाता है. Okay, but if it continues to persist even after, if the raised IOP continues to persist even after the medication after 1 or 2 weeks, then the patient is termed as steroid induced glaucoma or steroid responder, and henceforth the patient is not given steroids. Okay. You're getting my point? Yes. Yeah. Right. Hello, ma'am. Hello. हेलो मैम. Yeah. मैम स्लिट लैम्प लेजर और आइडियो लेजर में डिफरेंट क्या होता है, मतलब फर्क क्या रहता है? आप I mean what is your like, अभी मैंने जो बताया आपके हिसाब से आपको कितना समझ में आया, स्लिट लैम्प लेजर और आइडियो लेजर? स्लिट लैम्प लेजर में स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में जैसे बैठते हैं वैसे पेशेंट बैठता है. जी मैम. ओके, तो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में जैसे पेशेंट को देखते हैं वैसा ही बैठता है लेजर के लिए, मगर लेजर हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, तो इसलिए हम लेंस यूज करते हैं. आंख में जेली डाल के वो लेंस बिठाते हैं, वो लेंस के थ्रू लेजर देते हैं. आइडियो में क्या होता है, पेशेंट लेटा, आइडियो करते हैं ना, इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोपी करते वक्त पेशेंट को लेटाते हैं ना, तो लेटता है पेशेंट, वहां पे हमको लेंस की दूसरे तरह के लेंस, वो 20D लेंस जो हम यूज करते हैं आइडियो करते वक्त, वही लेंस से हम लेजर करते हैं. थैंक यू मैम. हाँ, लेजर जो है इंटेंसिटी, टाइप ऑफ लेजर, एवरीथिंग सेम, द ओनली थिंग इज द वे इट इज डन. ओके मैम, थैंक यू. Jennifer wants to ask something. Hi, ma'am. Good evening, ma'am. Yeah. Yeah, it's nice explained, ma'am. Thank you anyway. Ma'am, I have one doubt. Actually, after IVTA, how long it take to dissolve the medicine in the eye, ma'am? It will take 3 months. It will take three months. Yeah. Because patient feeling after the IVTA, the patient feels feeling the blur eyes, floating, keep on telling. We explained also the patient is keep on telling floating. So that's why I have a doubt. How long? I can tell the patient, no, it will take 3 months like that. Yes. You can tell. You should tell that. Okay, ma'am. Thank you. Actually, it is a confirmation for the patient that the drug has been given to them. Yeah. After given only, ma'am. Yeah. That's what you should tell them, that if floater is a good sign. If they say floater is a good sign for you because the drug is still there and it will be there for 3 more months. Okay. Thank you so much, ma'am. Sir, I can't hear you. Hello. Sir. Yeah, can you hear me now? Now I can hear you. Yeah. We were discussing in our first or second session,
do we really need to counsel for OPD based diagnostic procedures, especially for retina like OCT or fundus No, for photograph? fundus, yeah, see, sometimes what happens, sometimes for OCT and fundus photography, it is a OPD procedure. Most of them don't counsel, but because you may have different type of patients, right? You may have an illiterate patient, or you may have a patient who can't hear and talk. So such patients, maybe the attenders need to be told, okay, fine, this is what is going to be done. And it happens very quickly actually nowadays. Fundus photograph and OCT. Any other question in the audience? Okay. Now one more question for you. Counseling for anterior segment procedures and for posterior segment procedures is a different ball game altogether, because leaving aside the procedure, the psychological effect of the patient is totally different. So, psychographically, what do you think? I mean, what kind of approach a counselor should take, especially in case of younger patients or parents of ROP patients? So, what kind of psychographic approach a counselor should have? See, most of the time I would say that instead of, once the patient comes to you and it is a posterior segment disease, whether it is ROP or it is a visually not gratifying diagnosis, then most of the times the doctor does not concentrate on telling the diagnosis to the patient, because that doesn't become important. Though telling them that this has happened, that has happened, and this percentage of your vision is gone and you're not going to get this, all this doesn't matter. What matters is that you talk to the patient, tell them or get them to a awareness that this is the vision loss which has happened. Henceforth, from here, the vision loss should not happen. To control that, we will do whatever it is possible. It is not like cataract surgery where you are like, you can't even promise anything. So they have to come to a consensus, like the patient has to become aware that yes, that acceptance has to come. Yes, this percentage of my vision is gone. And to come to that acceptance, the patient will have to talk to the doctor, and on multiple visits only they come to that conclusion. I mean, to come to that level. In one sitting, you can't expect them at all to understand that. They will, because in one sitting you tell them all the reality, the next visit you will not find them with you, especially in posterior segment. So I feel the doctor also has to spend more time with the patient, especially with the poor prognosis patient, as well as the counselor. Like when the doctor is talking to the patient, I would prefer the counselor being there, so that the counselor already knows what approach we need to have with this patient, so that we don't lose the patient, not for our benefit. It is for the patient's benefit, because posterior segment, it's not economically very viable. Whatever we are doing in posterior segment, it is for the benefit of the patient. So I would, most of the times for posterior segment, whatever procedure we are doing, the doctor talks, and when the doctor is talking to the patient, the counselor is most of the times present with the doctor, so that from there he continues. It's not that the counselor is sitting in one room and the doctor is sitting in one room. It doesn't happen with posterior segment like that. In posterior segment, the counselor is always with the doctor. So once the doctor starts and ends the conversation, from there the counselor takes on, so that the patient is pacified and he knows that, okay, next time I come, I know how it goes. Or the counselor also knows, okay, fine, don't worry, this, again, because we need multiple sessions for most of the patients, they have to come back to us. So the counselor works in that way for us.
It's not for economical reasons. It is to get the follow-up back again to us. Yeah, and especially in case of, I mean, most of the practice, many of the practices are solo practitioners, जहाँ पे anterior segment का काम predominantly होता है, and there is a visiting VR surgeon. So in that case, it is very important to attend your VR surgeon's OPD for a counselor. Yeah, Counselor correct, अगर correct, साथ patient के साथ chamber में रहे, तो correct, correct. close visits में उससे बात करने में ज़्यादा आसानी रहेगी. Very true, very true. We come to know that what kind of plan of action our VR surgeon is suggesting to the patient. That's a wonderful point that you made. Correct, correct. Most of the posterior segment people who do freelancing, they have their own counselor also going along with them. Yeah. I mean, apart from the institutional counselor, they have their own counselor going along with them, because it's a lifelong patient for you, and you should be available to them whenever they want to talk to you. And there are lots of second opinions in posterior segment, because the visual prognosis is bad. The same patient would have gone to all the 10 doctors in your area. So you have to be mentally prepared. Yes, this patient has traveled all the doctors and still coming to me, or if he has still come to me, he will still go to 10 other doctors. Right. Yes. So I think no question today from the audience. It was understandable or Little louder, Pratik sir. Hello. Little louder, sir. Your voice is breaking. Okay. Okay. Is it fine now? Yes. No, not hearing. Hello. Ha, sir. Yeah. Is it audible now? Now it is audible. Yeah. Yeah. Thank you. We have few ophthalmologists in the group, and I would request inputs from them. Like, I mean, I guess we have Dr. Chetan Patil. Are you there, Dr. Chetan? I think he's left. Okay. Dr. Khurana sir, are you there? No, I think he also left. Anyways, yeah, Dr. Senthil. From ophthalmology perspective, I mean, we run our own practice. Audio not clear, sir. Hello. Ha, sir. Is it audible now? Yeah, now it is okay. Yeah. So from ophthalmologist perspective, what you said is right. I mean, many of VRs carry their own counselors or OPD assistants with them. But then, if a VR surgeon is visiting my practice, and then primarily the patient is in my town, he is going to be doing follow-ups in my town. So, if you come on this side of fence, if you are a solo practitioner, and then a VR surgeon is coming to your place, then what would you suggest for his team? I mean, how do you handle that patient who's been cross-referred to a VR surgeon for his OPD, and then how do we handle that patient, and how do we follow up with such patients? Is it advisable to get directly in touch with the patient, or is it always a good idea to go through the VR surgeon or VR team? I got your point. See, there has to be a
what to say, the communication, whatever is there in posterior segment, it's very difficult. Okay. And as I said, the visual outcomes are not a very great like anterior segment. It is slightly on the darker side. It is slightly pessimistic. But the thing is, as a surgeon, I know that, or most of the VR surgeons know the prognosis. Okay. But we can't make it like, you can't stamp it on a patient for lifelong. You can't take away that hope. There are few patients, like, you can assess your personality of the patient. There are few people who are very practical, who are updated, educated, and they understand the consequence of whatever has happened to their eye. They take it on a positive stride. God has given us two eyes. One eye is affected. I will take care of the other eye. The problem comes with where we have villages being affected both the sides, especially the farmers. So for them, telling them that this is your eye, this is your retina, why it doesn't bother them. It doesn't bother them, it doesn't matter to them. So you will have to tell them that, see, you have to protect your vision because you're going to stay for so many years. Like if he is already a 50-year-old man, then you will have to say to them that you can't become blind. You have another 30 years to live. So for that reason, the only thing that whether the VR surgeon is coming to your place or the patient is going to the VR place, the only thing that you have to have is, though the posterior segment is dark and pessimistic, the only thing that you have to be dedicated is to get the patient back for follow-ups. Whenever needed, the patient should come for follow-up. Don't take away the hope of the patient that you are going to become completely blind. Or if the patient has already become blind completely, then at least look at the positive aspect that, okay, the other eye is normal. Whatever the vision is there in the other eye, that has to be preserved. You have to be highly motivated to be a counselor on posterior segment side. Was a wonderful point again. I mean, you yourself have to be highly motivated, and I think you have to be you have to be very empathetic. Very true. When you are handling, especially posterior. I mean, that stands true for both the segments. Correct. And No, yeah. It is a fact. It is a fact. Yeah. Posterior segment, you have poor prognosis. So as a counselor, you should know that, yes, this is a poor prognosis case. How much ever good the condition of the eye may be, but it is a posterior segment case. It is going to be a lifelong case, or it is going to be a case of 2-3 years. Or it is going to be a case of 4-5 years. This patient is going to come to you for 4-5 years, or this patient is going to come lifelong to me. So you need to be like, you should be very clear as a counselor or as a doctor also. Yes, I have to talk to this patient as practically as possible, and at the same time, don't tell something which will make them lose the hope, like that. There is, many a times we have combined surgery. We combine posterior with cataract. So, any tips for that? While counseling such patients, why we are doing it combined, and then cost factor or any other factor that needs to be taken care of. ऐसे केस में counselor के लिए कुछ tips आप दे पाओगे? See, combined surgeries comes first. Most common combined surgery when we do is when we have a dislocated or a subluxated or posteriorly dislocated cataract lens, where you need to do a little bit of vitrectomy and the lens has to be placed. You don't have place in the sulcus because the posterior capsule is already damaged. So most of the anterior segment, like previously the anterior segment surgeons were trained for vitrectomy, but nowadays posterior segment people do the vitrectomy part or remove the lens part or whatever it is. Only the placing the artificial lens, that part is done by the anterior segment surgeon. So that is the most common procedure done, combined surgeries. Okay. Second combined surgery is in diabetic retinopathy. The patient has dense cataract.
but he also has diabetic retinopathy. He has a retinal detachment, and the cataract is there. The cataract surgeon performs the cataract first because it has to be very clear. For the posterior segment has to be become very clear to the doctor to see and perform the surgery. So the cataract surgeon does the cataract and goes, and then the retina surgery is done. Both the surgeries can be done together only because cataract surgery happens very fast. It's a 5-10 minute procedure, so it does not cause much harm to the patient. The lens is also placed in one sitting, and the retina surgery happens in 1 hour or 1.5 hours. So combined surgery, first thing is there is a need for combined surgery. Second thing is it is cost effective. Third thing is healing happens faster. The visual prognosis is faster because the more number of surgeries you do on an eye, the chances of healing delays, and as well as the visual outcome also somewhere we are delaying. So combined surgeries are very challenging cases. There are specific indications where it has to be done. Both either it is advantageous both for the cataract surgeon as well as for the posterior segment people. On the biggest advantage is the cataract happens in 5-10 minutes. Yeah, Jennifer wants to ask something. I'm sorry, if a combined surgery, what's the responsibility for the patient, ma'am? Which doctor, even posterior segment doctor or anterior segment doctor, ma'am? See, I'll tell you the implication of combined surgery. If endophthalmitis happens, it is equally on both. Okay, but if there is some other complications, then medico-legally it is, if it is a combined surgery, medico-legally both the surgeons, whether it is happening because of the anterior segment or whether it is happening because of the posterior segment. Okay. If you're asking that way, yeah. Thank you. Yeah. While answering the last question, Sir. yeah. While answering the last question, the last point you made was very important. I mean, what kind of benefits counselor should project, especially in case of combined surgery. कि कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरी चीज है टाइम सेविंग है, मतलब एक ही सिटिंग में दोनों चीज हो जाएगी, या फिर फॉलोअप्स बहुत कन्वीनियंट हो जाते हैं, you need 2 sets of follow-ups. So that was very good point. Yeah, I think Mr. Sandeep is again raising his hand. Mr. Sandeep, पूछिए. हेलो. हाँ सर. जी. सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे रेटिना सर्जरी करते हैं, हाँ. उसमें ऑयल डाला जाता है. हाँ. मैम कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स को ये रहता है कि सर्जरी के बाद ऑयल डाला गया, उसके बाद ऑयल निकालेंगे. हाँ. बट अगेन डॉक्टर उनको सेकंड थर्ड उसकी जो ओपीडी आता है पेशेंट, तो हाँ. उनको ये बताया जाता है कि आपका साथ में कैटेक्ट रिमूव करना पड़ेगा. हाँ. तो पेशेंट टू माइंडेड हो जाता है कि हमें तो ऑयल निकलवाना था, अब हमें 2 पार्ट्स करवाने पड़ेंगे. हाँ. 2 प्रोसीजर करवाने पड़ेंगे. अभी क्या है कि रेटिना सर्जरी करते वक्त जब हम लेंस अगर क्लियर है तो लेंस को बिना टच के ही ऑपरेशन होता है ताकि कैटरैक्ट ना हो. मगर कभी कभी क्या होता है कि जब हम सिलिकॉन ऑयल डालते हैं तो कैटरैक्ट फॉर्मेशन जल्दी हो जाता है. तो वो जब हम सिलिकॉन ऑयल डालते हैं और हम वो कंसेंट फॉर्म में लिखा रहता है तो कि अगर ऑयल डाला गया है तो कैटरैक्ट चांसेस बढ़ते हैं 50%, और ऑयल रिमूवल के वक्त आपको कैटरैक्ट की भी जरूरत पड़ सकती है, वो लिखा हुआ रहता है कंसेंट फॉर्म में. सिलिकॉन ऑयल कॉसेस कैटरैक्ट. अभी 50% रिस्क है सिलिकॉन ऑयल से. ओके. तो वो कंसेंट फॉर्म में लिखा रहता है और वो पेशेंट को पहले ही पता होना भी चाहिए. जी. Yeah, I think that should be part of your first sitting counseling. Yeah. That these are the probable complications or the side effects, or this is what you can expect. Correct.
I think We can wind we up, are I done think. with. Yeah. Before winding up, if you Thank you. Thank you so much. Hello. Hello. Ha, sir. No voice. Yeah. What I was, is it audible now? Ha, Yeah. sir. Yeah, I think there is some problem with my connection. What I was asking, ma'am, is before winding up, as a summarizing thing, if you can give our group the final tips as a counselor, though the session is pertaining to posterior segment, in general, as a counselor, few bullet points, if you can give, it would be really great and helpful. Yeah. As a counselor for posterior segment, you have to have patience, patience, and patience. And then you have to have a good rapport with your doctor. You will, there are hardly 5 or 10 conditions in the hand. So you will be aware of most of the conditions and most of the visual prognosis. Whatever is there, it will be very visible to you. The only thing is, don't be harsh on the patient, be patient. And most of the patients in posterior segment are going to be your lifelong patients. So you need to have a different attitude. You are going to see them whether you are going to like them or not. Whether you will be seeing them more frequently. So have a pleasing personality, have a acceptable personality. uh, you are already aware of their conditions. Yes, it's a poor prognosis case, so it's okay. Be empathetic, be talking to them first. And as a counselor and as a posterior segment surgeon, I can tell you that I always first listen to the patient. First listen, and then you can talk. Because to talk, there is very less in posterior segment. you know you don't have to show them the reality every time. uh, so most important thing is have patience, listen, have a good rapport with the patient as well as with the doctor, and be prepared to see them for at least 3 to 4 years. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you so much Yeah, for thank your you. Voice breaking. Hello. Ha, sir. Hello. Am I Ha, audible? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So thank you. Thanks on behalf of Aftal team, on behalf of the whole group. And we Yeah. really enjoyed both the sessions. Thanks Yeah. for joining us. And in future also, whenever we need, we will trouble you. So Yeah, I'm happy to be a part of your group. Yeah. yeah, that's Thank you wonderful. so much. Thanks. Yeah, yeah. Thanks.